Well, the conversation that you're about to hear is a deep one. I got a chance to sit next to a spiritual guru who is well renowned. I'm talking about Shri GyanVatsal Swami Ji from BAPS. We spoke about success, we spoke about spirituality, we spoke about kids in the US and their upbringing, and we spoke about the brand new mandir being built at the Robbinsville, New Jersey location. It's a wonderful conversation. Please listen to the entire conversation. And yes, if you like it, please do subscribe to the channel, like the video, and share it with your friends. Enjoy it. Alright, आप सुन रहे हैं रेडियो कारवां. Join the caravan and the RJ Vaibhav Show podcast on Spotify, Apple Podcasts and YouTube. फिलहाल हमारे साथ हैं, he is a renowned spiritual leader and a renowned social reformer for BAPS. We do have GYAANVATSAL Swami Ji joining us. सबसे पहले तो हम बहुत आभारी हैं आपके. Thank you so much for taking time out and हमसे बात करने के लिए. We feel really honored that you're speaking to us. Thank you so much. Thank you. All right, Swami Ji, अमेरिका में भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, राइट? वी आर ऑल जस्ट रनिंग अराउंड ऑल द टाइम. सो आई एम श्योर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनके जहन में, उनके दिमाग में एक सवाल है, वन क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली: हाउ डज वन रिलीव स्ट्रेस इन दिस very fast life? Well, when the question comes about relieving stress in one's life, one has to very clearly understand what human life is. If you make a clear understanding that human life is not just running around for materialistic possessions. Right. Human life is not just about gaining fame and name and money. Human life is not just about more and more of social connectivity. Everything to a certain point is fine. But anything in excess is poison, and that poison is stress. So if we understand the basics of human life, what actually human life is, then we come to a point of understanding how can we relieve ourselves of the stress, as you talked about. So first thing, a practical formula that we have designed for relieving stress in one's life in the midst of this hectic schedule as you described. And it's not now just only in America, in every part of the world it is. We have designed a formula which is called the 8+8+8 formula. Of the 24 hours that you have in a day, you must distribute it well into 8+8+8 system. Wow. First 8 hours is your honest, ethical hard work in your profession. Second 8 hours is a good sleep or rest. And third 8 hours is we teach 3F, 3H and 3S. 3F is family, friends, faith. 3H is health, hygiene, hobby. And 3S is your soul, service and smile. If you can well distribute your third 8 hours of the day into these 9 fragments, of course, during the day, it is called a well-lived, well-balanced life. Right. And you live a well-balanced life, you can maintain or definitely control your stress levels. Wow. That is, you have a control over your stress levels. That you do your job honestly and ethically, you take care of your family, you have your hobbies, you have your spirituality. Good time, energy distribution among all aspects gives you a stress reliever. And our Guruji Pramukh Swami Maharaj often used to say that if you accept the all doership of God, then you will be relieved of stress. ये उनका एक उपाय था, जो शास्त्रोक्त हैं, प्रमुख स्वामी महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि भगवान में श्रद्धा रखेंगे, भगवान को करता हरता समझेंगे. बिल्कुल. कि मेरे जीवन में कोई भी घटना बनी, भगवान की इच्छा से बनी है, मेरे अच्छे के लिए बनी है, ये समझेंगे तो यू विल रिमेन स्ट्रेस फ्री. ऐसी समझदारी से चलते हुए हमने प्रमुख स्वामी महाराज को जीवन भर देखा है. ऐसी ही समझदारी से चलते हुए हमारे गुरु हरि प्रगट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज को हमने प्रत्यक्ष देखे हैं. तो ये दो बातें हैं स्ट्रेस रिलीव के लिए. बिल्कुल बिल्कुल. एंड यू नो, आपने जो कहा, होपफुली ये जो जितने हैं यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आई होप दे इम्बाइब दिस इन देयर लाइफ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्पीकिंग ऑफ यंगस्टर्स एंड चिल्ड्रन, राइट, यहाँ के जितने भी पेरेंट्स हैं,
कुछ इस रूम में हैं और उनके दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है, देयर इज ऑलवेज दिस वरी, especially because of the environment nowadays that we live in, right? We have lots of wrongdoings happening in the society. So parents are always worried, how do I give my children the proper upbringing that they deserve in this environment? तो उसके लिए हमेशा पेरेंट्स का ये वरी रहता है. How is spirituality a path that children can obtain, and what do children need to do to make sure, or parents need to do rather, that they make sure that their children are on the righteous path? Well, as you said, the situation is complex a bit because the things that we see happening in the society today, we need to nurture our kids on the path of righteousness and morality. Yeah. For example, just yesterday it was reported that there was a school shootout in Louisiana. Mm-hmm. Every few days there is a shootout at school in US. Yeah. So children carrying guns to school is an unimaginable reality of life. Yeah. So as you rightly put in, we need to give them moral education. Yeah. So as you asked that from the parents' point of view, as they send their children to academics at school, so they have an academic institution, academic school for their education. Parents must start a moral school at home. Absolutely. And what is that moral schooling? Our Guru Pramukh Swami Maharaj used to say about घर सभा. मतलब क्या होता है कि परिवार में रोज रात्रि भोजन के बाद परिवार साथ में बैठे जी. And the parents tell the great moral stories from the great child heroes of India like Shravan, Prahlad, Nachiketa, Dhruv, because you asked me about nurturing of kids on the path of morality and spirituality. तो माता पिता ये बातें करें जी. तो ये कैरेक्टर के सद्गुण बच्चों में के हृदय में स्थिर होते हैं जी. और जब बच्चों के हृदय में ये कैरेक्टर के सद्गुण स्थिर होते हैं तो वर्ल्ड कैन एक्सपेक्ट बेटर सिटीजन्स ऑफ दैट जनरेशन, राइट, फॉर द सोसाइटी, फॉर द नेशन. तो पहली बात यह है कि मॉरल स्कूल घर में चालू करना वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, और वो मॉरल स्कूल का प्रैक्टिकल सेशन है घर सभा जी. प्रमुख स्वामी महाराज अपने अनुभव से कहते थे कि घर सभा से विश्व शांति होगी. दूसरी बात यह है फॉर नर्चरिंग ऑफ द किड्स, कांस्टेंट लव, कंपैशन फॉर चिल्ड्रन. बिल्कुल. जो परिवार में बच्चों को प्रेम नहीं मिला, यहाँ अमेरिका में तो बहुत ज्यादा प्रतिशत बच्चे दे लिव विद सिंगल पेरेंट जी, और समटाइम्स नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट्स जी. तो जो प्रेम मिलना चाहिए बचपन में, जो करुणा मिलनी चाहिए बचपन में, जो माता पिता की गोद मिलनी चाहिए जी, जो दादा दादी की गोद मिलनी चाहिए बैठने के लिए, वो ये देश में दिखाई नहीं पड़ता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो फिर वो अपब्रिंगिंग, वो नर्चर संभव ही नहीं है. बिल्कुल. तो दूसरी बात ये है कि द लव एंड कंपैशन ऑफ पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स फॉर देयर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन गिव्स अ प्रॉपर अपब्रिंगिंग टू चिल्ड्रन. राइट. Third thing, when I talk to teachers, when I'm in seminars and conferences for academicians, I tell them that, for example, if you have a period of 40 minutes in your classroom to teach a subject, right, don't make it 40 plus 0, make it 35 plus 5. Okay. वो क्या होता है? Okay. Don't just keep on teaching your subject for 40 minutes. You teach your subject for 35 minutes. And last 5 minutes of your period, you tell children inspiring stories of great heroes of society. Wow. So beautiful. जो भारतवर्ष की जब बात है तो आप गांधी जी की बात कर सकते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर सकते हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कर सकते हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कोई प्रसंग आप बच्चों को कह सकते हो. तो हर पीरियड में स्कूल में 6 या 7 पीरियड्स में बच्चे को 6-7 अच्छी बातें 5-5 मिनट की रोज मिलती है. Right. They get inspired also. They get inspired, and that is how the nurturing. So I told you about 3 things.
These three things come together to nurture a child. बिल्कुल बिल्कुल वाओ दिस इज़ अमेजिंग एंड आई थिंक जितने पेरेंट्स हमें देख रहे हैं और टू बी पेरेंट्स हैं आई थिंक इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू और स्वामी जी के लेक्चर्स हम सब देखते आए हैं और सुनते आए हैं एंड ही इज़ ऑलवेज सो वेरी इंस्पायरिंग अनदर थिंग स्वामी जी दैट a lot of people are chasing in life is obviously success. Right, everyone wants to be successful in their life, in their field. चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या आईटी में हैं, या फिर आप सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, कुछ भी हैं. Everybody wants to be successful, but in that run for success, in that chase for success, we sometimes lose ourselves. We overdo things. So what is a balanced way to maintaining a positive pathway to success, and can meditation help in that? What is spirituality's role in the chase for success? Well, आपने जो प्रश्न पूछा उसका आंसर तो 1 घंटे में देते हैं तभी पूरा होता है. तो ठीक है, कुछ 2-4 मिनट में देने का प्रयत्न करते हैं हम. कि देखो, सक्सेस की डेफिनेशन कभी कभार लोगों के मन में गलत फहमी में आ जाती है. People just see success as lots of money and lot of work and lot of expansion of their business. ये एक सक्सेस है, हम ना नहीं बोलते हैं, लेकिन वही संपूर्ण सक्सेस है, वो बात गलत है. According to my thinking, I believe that the one word definition of success is satisfaction. Right. I talk this in my corporate talks, in my professional talks. Satisfaction is success. क्योंकि जब संतोष आता है कि मेरे पास मुझे जो चाहिए वो मिला है, मुझे जो जरूरत है वो मिला है जी, जरूरत से आगे अब जितना भी मिले दैट इज एक्स्ट्रा. सी, लग्जरी इज नॉट सक्सेस. लग्जरी वाले भी सुसाइड करते हैं. बिल्कुल. सेटिस्फैक्शन इज सक्सेस. सेटिस्फैक्शन वाला कोई सुसाइड नहीं करेगा. बिल्कुल. तो सेटिस्फैक्शन इज सक्सेस. ये समझदारी आई, दिस अंडरस्टैंडिंग बेसिकली स्टेबलाइजेस यू in the constant run for success. This understanding is part of spirituality, that when you understand that satisfaction in life is more important than any other thing, it is an aspect, one angle of spirituality, satisfaction. So जब हम success की बात करते हैं तो satisfaction is success. और आपने जो प्रश्न पूछा, meditation does help, yogic exercises, that is yogasanas, do help. Going to mandir and sanstha samagam, that is association with saints and spiritual discourses, does help. Reading the scriptures like Ramayana or Mahabharata or Srimad Bhagavad Gita does help. All this combined gives you a definite thought process, makes your attitudes of positivity more concrete. This is how you stabilize yourself and walk on the path of success. I would not use the word undisturbed, but less disturbed. Absolutely, absolutely. So well put, and you've articulated it very, very briefly, and thank you so much for that. Lastly, आपका एक मुख्य कारण जो US आने का इस बार है, वो of course रॉबिन्सविल में अक्षरधाम जो बना है, और absolutely उसका जो अभी we're all here. We're very happy that it has happened. मेरा सवाल ये है कि why was this important? Well, Pramukh Swami Maharaj and he had a vision for this. He envisioned this. और अक्षरधाम जो स्वामीनारायण अक्षरधाम रॉबिन्सविल में बन रहा है जी, पूरा हो गया जी. 8th of October, our Guru Hari Mahant Swami Maharaj will inaugurate it and gift it to the society. That is in one way would be the biggest gift that the land of America has ever got, the people of America has ever got. Right. It is on 300 acres of land, so when it will be inaugurated, it will be the largest traditional conventional Hindu mandir of the world. Wow. Wow. It will stand tall with all pride of the greatness of Indian culture, tradition, legacy, way of living. तो ये अक्षरधाम जो बना वो समाज को 3 बातें देगा जी. एक है श्रद्धा, faith. Coming to Akshardham, people will have faith in themselves,
faith in society, faith in humanity, faith in religiosity and spirituality, and faith in God. मतलब श्रद्धा का एलिमेंट जी, फेथ का एलिमेंट बढ़ेगा, क्योंकि अक्षरधाम देखेंगे तो लोग अपने आप में खुद में बिलीव करना चालू कर देंगे, विच इज द बिगेस्ट थिंग। एब्सोल्युटली। कि यार ये 8000 मील से दूर लोग यहाँ आके ये पत्थर का गढ़न करके इतना बड़ा काम कर सकते हैं जी। तो यार मैं एक स्टोर चलाता हूँ, दूसरा स्टोर तो चला पाऊंगा। अरे वाह, क्या बात है। तो अक्षरधाम देखने से यू विल इंक्रीज द एलिमेंट ऑफ फेथ इन योर ओन सेल्फ, एब्सोल्युटली, यस, and in society and in humanity and in morality and spirituality and God. So element of faith which is most needed, because with all the talents and intelligence and backgrounds and support systems and experience that you have, if you don't have faith in your own self, faith in the system, right, faith in humanity, right, you won't be able to do anything in life. Absolutely. So first is that element which is very unique, which is extraordinary, which is priceless, which is divine. Akshardham will gift to the entire humanity. Second gift that Akshardham gives is we call sanskar, that is value and a value system. Again, see, your talent or your academics or your qualifications can open any gate for you. Correct. But only your character and value system can keep that gate open for you. So true. So value system, संस्कार, पारिवारिक संस्कार मतलब माता पिता को चरण स्पर्श करना, भाई बहन के साथ संबंध कैसे रखना, एक मैरिड लाइफ किस तरह से जीना, बच्चों का नर्चरिंग कैसे करना, समाज में एक आदर्श नागरिक के रूप में किस तरह से रहना, ये सभी संस्कार अक्षरधाम से लोगों के हृदय में ज्यादा दृढ़ होंगे। बिल्कुल। सो अक्षरधाम विल क्रिएट बेटर सिटीजन्स ऑफ टुमारो। यस। तो ये अक्षरधाम की गिफ्ट रहेगी ह्यूमैनिटी को। और तीसरी बात है सेवा, जो अक्षरधाम सिखाएगा कि हमें समाज की सेवा भी करनी है और प्रभु की सेवा भी करनी है, जिसको हम भक्ति बोलते हैं। Absolutely. Akshardham will teach service to society and service to God. Correct. So three things Akshardham will teach: Shraddha, Sanskar and Seva, the 3S. Yes. Which is the essence of spirituality, essence of scriptures, essence of humanity, essence of human living. Right. Right. तो ये बड़ी बात अक्षरधाम सिखाएगा। हमारे पास अक्षरधाम गांधीनगर में है, गांधीनगर दिल्ली में है। जो मैंने बातें अक्षरधाम के बारे में आपको की, ये सभी बातें, all this, people have benefited since decades from Swaminarayan Akshardham at Gandhinagar, from Swaminarayan Akshardham at Delhi. And so the same thing Swaminarayan Akshardham at Robbinsville is going to put forward for people. Absolutely. And already it has started happening. Well, I hope you enjoyed this wonderful conversation that I had with Shri GyanVatsal Swami Ji. I learnt a lot. I hope you did as well. Do subscribe to the channel and, of course, keep supporting. Thank you so much for watching.